So, hi friends, this is very important process of employee life cycle management, जिसकी हम साल में हर every individual waits for that, let it be HR, let it be organization, or let it be any individual employee who is working effortlessly throughout the year, right? So the process is called as performance management process. I'm not talking about here performance appraisal process, but I'm talking about its base, right? कि appraisal का base क्या होगा? तो there is a process, right, which is we called as performance management system. How an individual will be evaluated within the organization? उनका rating कैसे होगा? कब होगा? क्या system उसके लिए work करेगा? अगर ये हम organization में create कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्रिएट हो जाता है, right? So without further delay, let me get into how the standard process should behave and should look like, right? So if we talk about performance management process, so the process steps include by designing the KRA and KPI, right? First of all, I'll also cover a video that how we should design a KRAs and KPIs. But before that, it is a top management decision, right? कि KRA KPI should introduce within the organization or not. Once it is decided that organization is pursuing it, then the KRA KPI designing activity is started, right? So here I would like to bring your notice that this color denotes that whose responsibility it is. So as you can see here, it is HR plus RM's responsibility. Okay, who will ignite this task? HR will ignite this task, right? So then the designing, after the decision has been taken, then the decision should also get into that what will be the evaluation cycle. साल में हम कितनी बार KPIs को evaluate करेंगे. So based on my experience, I have worked with the organization की जहाँ पे काफी operation streamline हो, वहाँ पे every 2 quarters KPI evaluate होते हैं. What we practice within the Anvekshik is a monthly system. I have worked with the IT company into digital marketing and digital branding solution and all. So they were doing it on a weekly basis. We work with the large manufacturer. They practice this on a quarterly basis, right? Here within the clients of ours, we ask clients to do at a quarterly basis, right? तो आपका क्वार्टरली, आपका साल का स्ट्रेटेजी डिफाइंड है, आप उसको क्वार्टरली ब्रेकआउट कर रहे हैं और क्वार्टरली आप जो है टारगेट्स डिफाइन करके, गोल डिफाइन करके आप KPI जो है वो इवेल्युएशन का साइकिल का डिसीजन ले सकते हैं. सो वंस द डिजाइनिंग हैज डन, राइट, द इवेल्युएशन साइकिल इज आल्सो क्रिएटेड, राइट, द हैंडओवर ऑफ द KPI इज द नेक्स्ट स्टेप. कुछ KRAs ऐसे हो सकते हैं कि जो साल में आप एक बार करो, राइट, आउट ऑफ 100%. अब 85% मार्क्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आप क्वार्टरली इवेल्युएट कर सकते हो. बट लेट्स से कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अ ईयरली टारगेट वेयर इट इज नॉट ब्रेक अप इनटू द क्वार्टरली टारगेट. तो ऐसे कुछ KPIs, ऐसे कुछ ही डिपार्टमेंट में ऐसे आपको आउटलायर डेटा एक ऐसा मिल सकता है कि जिसका आपको क्वार्टरली बेसिस ना करके आपको ईयरली बेसिस पे करना पड़ सकता है, राइट? सो देन व्हाट वी डू इज द हैंडओवर ऑफ द KPIs टू द इंडिविजुअल टीम मेंबर. ये सिर्फ देना नहीं होता है, उसको समझाना भी होता है, उसका इंपॉर्टेंस भी समझाना होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज दी आप ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में टीम मीटिंग्स करके डिपार्टमेंट वाइज या तो सीनियोरिटी वाइज आप डिफाइन करके आप ऐसे छोटी छोटी मीटिंग्स करके आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें कवर कर सकते हैं. देन व्हाट पार्ट कम्स इज द डेटा कलेक्शन. व्हेन इवैल्यूएशन साइकिल इज अकर्ड, देन वेयर वी हैव टू collect the data for the KPIs. Then performance evaluation comes, right, as per the cycle. So what we do is we evaluate the KPI based on the targets and data, and then we analyze the overall performance, whether it has reached to benchmark or not, right? And based on performance review, reporting manager and HR together can give the feedback to the individual employee, right? If the benchmark is above, performance is above the benchmark, then we can get into the award reward. But if the performance is the below benchmark, okay, so then where we also come to the solution that one may get into the performance improvement plan. So PIP is a separate process, I'll also cover that, but here for just a junction, right, I am introducing that a PIP can be created, and where the performance is above par, above benchmark, there where we should celebrate that so that an individual gets motivated,
right? So award reward is a part of it. So यहाँ पे अगर आप अप्रेजल साइकिल आपकी 12 महीने की है, साल भर में एक बार होता है, जैसे 99% कंपनीज में वही सिस्टम फॉलो होता है. सो ये जो डेटा आपने एक्यूमुलेट किया है वो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के दौरान भी काम आता है. So here how this process works. So I'll also create one video for the KRA and KPI and its understanding for your better clarity, right? I hope you have got the essential idea about the how performance management system should look like, and then we can proceed it further, right? Thank you so much for connecting.